Today's topic we're gonna learn about the SQL injection attack. So this is the OWASP top 10 critical vulnerabilities on your OWASP top 10, and we're gonna use W3 School also. And in W3 School we're gonna use SQL injection attack. So over here on the screen you can see simple definition of SQL injection. So यहाँ पे छोटी सी definition दे रखी है आपके SQL injection की. SQL injection होता क्या है, उस पे क्या क्या चीजें आपकी approved होती है. जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, SQL injection is a code injection technique that might to destroy your database. SQL injection is one of the most common web hacking techniques, and SQL injection is a placement of malicious code in SQL statement by web page input parameter. जो वेब पेज इनपुट यहाँ पे दे रखा है, हर एक पैरामीटर पे एक डेटाबेस से कोऑर्डिनेटेड होता है. जैसे कि आपका मान लो कि SQL डेटाबेस से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपकी टेबल नेम्स, आपकी stored informations like your customer informations, your item informations, your login credentials. Each and every one has a database queries. So यहाँ पे सबसे ज्यादा जो important है आपको आइडेंटिफाई करना है कि SQL injection कैसे काम करता है. SQL injection usually occurs when you ask a user to input like a username and user ID, and instead of the name ID, the user gives an SQL statement that will unknowingly run as a database query. In the back end, we know there will be lots of SQL queries, but in the front end, we can see only the application which is over there. So, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? Look at the following example, which creates a select statement. Select statement is a fetching file, adding a variable. Variables क्या होता है? एक simple content, जैसे user text, user ID. एक variable है इसमें एक data डाला है. To select string, string क्या होता है? Characters in programming languages. User text user ID is equal to get request string user ID. अब user ID कहाँ से होगा? आपके specific Unicode numbers. Text SQL select star from where user ID is equal to text.txt file, जहाँ पे आपके डेटा सारे stored है. तो मेजरली अगर मैं यहाँ पे SQL injection की बात करूँ, how an attacker simply manipulate the database server to submit some queries from there. So for example, if you see over here, union select username password from users minus select name description from product where category is equal to gift, union select username password from users. A simple query has been executed from the submit button. Then the submit button will request to the database, and the database give you all the passwords and the usernames to the attackers. The major component of this attack is to simply manipulate all the data one by one, and which can be lead us for information gathering part for further stages. For example, if you see here the proper definition of SQL injection. So it's all up to you guys to how to understand the basic syntax of SQL injection. SQL injection is a web security vulnerability that allows an attacker to interfere with the queries that an application makes it to a database. It is generally allows an attacker to view data that are not formally able to retrieve, because that is on the backend side, but in the front end we can only have the access of the applications. This might include data belonging to other users or other data that application itself able to access. In many cases, an attacker can modify or delete the data, causing the persistent changes. Persistent changes means the data which is constant, that cannot be changed, stored. So in this scenario, we're going to talk about some application that could be lead us for attacker. But what is the impact? What is the cause of the SQL injection? A successful SQL injection attack can result in unauthorized access to the sensitive information such as your password, credit card details, and personal user interface. Some will be your sensitive information, some would be your password, some could be credit card informations. Many high-profile data breaches in every recent years have been the result of SQL injection attack, leading to the reputational damage and regulatory fines. In some cases, an attacker can be obtained
persistent backdoor in the organization system, leading to long-term compromise that can be unnoticed for an attacker state. There are lots of further things can be happened over there one by one, and many further things. So our major objective of this attack is to simply manipulate or manipulate the parts of attacks. For example, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आप देखो सबसे ज़्यादा डेटा होता है आपके डेटा ब्रीच की बात होती है एसक्यूएल इंजेक्शन से क्रेडिट कार्ड यूजर नेम पासवर्ड जो भी आपके डेटाबेस सर्वर में स्टोर्ड है वो आप फेच कर सकते हो जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे वाइड वेराइटीज ऑफ डेटा दे रखी है retrieve hidden data where you can modify an SQL query to return additional install subordinating parts subordinating the parts could be help. So the most important part is we can simply use it for there could be many further things can happen. So our major perspective would be to simply check all the possibilities one by one. For example, serving application logics where you can change a query interface with the application logics. अगर आप खुद सोचो कि सिंपल यहाँ पे जो queries दे रखी हैं आपको it's we gonna use burp suite to and manipulate all the possibilities one by one. And the most important thing is to simply understand how the things works. For example, you can see union attack where you can retrieve data from different database tables. Examine the database where you can extract information about the version and the structure of the database. See, blind SQL injection where the result of the query you control not return any application response. So you have to examine the behavior. Consider the shopping application and other following things. The most important thing which I already told you about that the parameter value is important. See, this proper URL has given over here. I always say you domain name. Check the domain name first of all. Check the file type. Dot the programming language. Question mark with the parameter with the value. So there will be always a thing or a query. See, a domain name could be a website. A file type could be a product type. Or the programming language could be anything. And the category, which is your parameter with the value, which is given over here. So for example, if you're looking for the SQL injection in any of the real life website, try to use the Google Docs. For example, think if I'm using in URL, let's use asterisk mark, wildcard. It could be anything. Wildcard be my file type, so I'm using PHP. Question mark, ID is equal to 1. And I'm gonna use, let's try to use some site. Let's take Indian website first of all. Okay, should I change this one? सर साइट जो होगा डॉट इन नहीं होगा साइट डॉट इन भी हो जाए कोई इशू नहीं है अगर मैं इन डाल रहा हूँ पीके डाल रहा हूँ तो वो वही खुलेगा सो आई गेस यहाँ पे प्रॉब्लम है एस्ट्रिक में चलो okay there are around 60 something websites over here but यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे Perplextex for ship जुलाई यहाँ पे ID is equal to 5 दे रखा है आप लोग खुद देखो यहाँ पे these are all Indian websites .in gun and shield factory with the ID. Just think about this one. Let's copy this URL.
Let's examine this one again. Let's try to examine this also, which is http www.gf index.php id is equal to 7. The id is equal to 7 is the column name from the database. Column name from the database server. So what could be the possibilities? The id is equal to 7. Column name from the database. So this id is equal to parameter. See, select star where table underscore name is equal to, let's try security. Select star where table name is equal to security, comma, column is equal to name is equal to, column name would be your id parameter from database. Something would be like this, obviously. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आईडी है आपका, आईडी एक कॉलम नेम है आपके डेटाबेस में, जहाँ डेटा हम फेच कर रहे हैं. बट अब मान लो कि यहाँ पे आईडी इक्वल टू 1 दे रखा था आपका, आईडी इक्वल टू 1 दे रखा है. अब यहाँ पे बात आती है आपकी वर्ड एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन क्या होता है कि सिंपल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आपका जो इंटीजर है, ये देखो जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स वो आपके स्टैंड्स होते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज, और जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो आपके होते हैं कैरेक्टर्स. So यहाँ पे आपको एग्जामिन करना है one by one all the possibilities that can be lead us for information gathering. Many further things can be done over here. So over here, so what are we gonna do? We're gonna try to fetch. Is it the value id is equal to 1? Is encapsulated with a single quote, double quote, bracket, single bracket, or double bracket column? So first thing first, you have to understand how the queries will work over there, and after that you can simply run some SQL injection syntax. तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपको id is equal to 7 दे रखा है, यहाँ पे प्रोसेस id दे रखी है. तो मैं देखता हूँ कि जो id is equal to 1, id is equal to 7 है, वो किससे एनकैप्सुलेट है. तो उसको जो जो मैं स्टेप करने वाला हूँ, द फर्स्ट स्टेप जिसे बोलते हैं एरर हैंडलिंग. दिस इज एरर हैंडलिंग, एंड एरर हैंडलिंग वी कैन यूज सिंगल कोट, डबल कोट और बैकस्लैश. सो लेट्स हैव अ लुक. सिंगल कोट, invalid data from the id field 7. Still this error is an error in the input. This is an error from a database. See, if I use double quote, invalid data from id, let's use backslash, invalid data found on the id field 7. Invalid data, back to the site. So we are getting an error from the database server. See, so let's use, if we can, I'm going to use blind SQL injection. In blind SQL injection, we're going to ask some queries from the server side in true and false conditions, and we're going to use AND condition.
we're gonna use and. Why? Because we're gonna put us two statement, 1 is equal to 1 and minus minus plus. Why we are using minus minus plus? Because we're gonna use it for comment out the right hand side query. right hand side की query को comment out करना पड़ता है क्योंकि आपको यहाँ पे hookup point जो कि आपके यहाँ पे create होगा. Let's see what will happen. सर एक और बार समझाना प्लीज ये वाली query. ये जो सिंगल कोड और माइनस माइनस प्लस के बीच में है ये आपके बैलेंस द क्वेरी बोलते हैं इसे, जिसमें आपको इन दोनों के बीच में आपको सिंगल कोड और माइनस माइनस के थ्रू आपको पेलोड यानी कि हुकअप पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे आप अपने पेलोड को एग्जीक्यूशन करोगे. जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पीआईडी दे रखा था, आपके पास ऐसा कुछ एरर आना चाहिए. और एरर क्या आएगा? You have an error in your SQL syntax. Check the manuals corresponding to your MySQL server version for the right syntax. We are near at line 1. See, most of the time, most of the people they simply use to identify the input parameter where we can place our payload. और मैं अगर यहाँ पे देखूँ अभी तक ये simple execute हो रहा है, और अभी तक कोई मेरे पास output नहीं आया. So this is a gun and shell factory which is from Kolkata, but this is a government website. Remember, if you're trying to use attacking on the government website, try to read those things first of all. Pistol type, and this is a new thing. जैसे यहाँ पे भी ऑनलाइन इज इक्वल टू दे रखता है, बट यहाँ पे कोई एरर नहीं आया मेरे पास. और यहाँ पे तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है. ये देखो, real website from the government. This is a real website of Indian website, Muscle Skeleton Society. और यहाँ पे जब आप देखो कि यहाँ पे आपके पास ये एरर आ रहा है, you have an error in your SQL syntax. Check that manuals corresponding to your MySQL server version for the right syntax near at line 1. Let's try over here. Single quote minus minus plus. First thing, balance the query. माइनस माइनस प्लस जो यहाँ पे यूज होता है वो आपके बैलेंस करने के लिए यूज होता है. जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, कमेंट्स जो डेटाबेस कमेंट्स के लिए यूज होता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली चीट शीट ढूंढ रहा था. फाइंड एक्सप्लेनेशन व्हाई वल्नरेबल बाय यूजिंग वर्बसूट स्कैनर. सबसे बेस्ट है वर्बसूट स्कैनर को यूज करना आइडेंटिफाई करने के लिए उसके बग्स को. तो यहाँ पे आई गेस दे गोना यूज द एक्टिव स्कैन. See, if you want to find SQL injection in the real website, all you have to do is to simply visit that website. For example, let me show you over here. Balance over here. So let's take this website. For example, this is the target website where we have to penetrate our skills. So first of all, I'm going to use burpsuit over here. So in burpsuit, we're going to look for the live scan. So new, we're going to use the crawl part. See, so this is my testing website, testing environment. So first thing first, through the burpsuit crawler part, we can identify all the number of directories on the server side that can be used for the further stages. आपको हर एक पैरामीटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ से बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई है, बट आई हैव टू स्पेसिफाई माय टारगेट वन. तो ये देखो ये क्रॉल कर रहा है यहाँ पे, तो इसको ऐड टू स्कोप कर देते हैं. शो स्कोप आइटम ओनली आ गया. तो यहाँ पे हम सिंपली कौन से वेबसाइट को कर रहे हैं? muscleskeleton.society.in को, जैसे इंडियन वेबसाइट है.
और यहाँ पे आप अगर देखो इट्स स्टिल क्रॉलिंग टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पैरामीटर वैल्यूज। सबसे ज्यादा ये देखो, अगर आप कोई भी वेबसाइट को क्रॉल करते हो और आपको दिखता है कि id is equal to 2, close is equal to 3, id is equal to 5, so that time in your mind you have to think about the SQL queries that could be used in very further stages. So my major agenda would be to simply penetrate or simply look for the valuable data that can be used for the further stages. For example, अगर आप यहाँ पे देखो, still it's gonna crawl, it's gonna take 14 minutes, but मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इसको एडवांस स्कैन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूँगा एक्टिव स्कैन। एक्टिव स्कैन क्यों करेंगे? बिकॉज वी गोना फाइंड सम vulnerabilities on the server, and I'm gonna pause this one, pause the first one. Why? Because दो scanners अगर चलाओगे तो it will create some error. So see the number of queries are generated over there. So this is a testing environment. This is a testing environment website. So we have to wait for all the possibilities. So अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे one information has been found. So यहाँ पे एक एक करके सारे vulnerabilities को चेक करेगा कि उसमें SQL इंजेक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि simple is gonna scan from the root directory and gonna find all the possibilities one by one if we can find any vulnerabilities on the parameter. So number of requests, the number of information, the low severity, we're gonna count from high and medium. So the number of requests means the number of parameter value will flow. So thousands of requests has been completed. So active scan will take some time. Okay, so let it be completed. So let's try with the manual approach. So this is the normal parameter value. So when you find there is an error on your there is an error of SQL syntax on the website, try to manipulate and try to look for other parameter values. जैसे कि यहाँ पे आपका id is equal to 5 था, तो यहाँ पे बहुत सारे other parameters भी थे, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय फंक्शन चला के देखता हूँ। ऑर्डर बाय फंक्शन आपका यूज होता है आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड करने के लिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो W3 school, if you are not familiar with the SQL syntax, check to use the W3 school. ये देखो order by function. The order by keyword is used to sort the result in ascending and descending order. But ये आपका basically find करने के लिए यूज होता है आपके number of columns उस server में. The order by keyword sort the record in ascending order by default. The sort record in descending order and use the dexec keyword. So let's use this one. So order by function में आपको क्या करना पड़ता है? आपको यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 9 दे देता हूँ, देखता हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ये देखो, इसमें बता दे कि अननोन कॉलम 9 है, यानी कि जो कॉलम नंबर ऑफ प्रेजेंट सर्व, अगर आपके पास ये एरर आ रहा है, अननोन कॉलम 9, so it means the number of columns are less than 9. So let's use 7, unknown column 7. So let's use 5, I guess. There is no error, means there is a column number 5 on the server side. Let's use 6. Yes.
So unknown column 6 is also there. यानी कि total number of columns are over there on the server side is 5. First step, you need to identify the parameter value which is vulnerable. Then you have to identify what are the column names are on the server side. The --+ is to use to comment out the queries from the backend side queries on the server side. The next thing what we can do, we can round out like this one also. और अगर आप इसको ऐसे भी दे सकते थे. See. डाउट है. बोलो. हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि सर जो कमेंट आपने किया था ना --+ का, तो अगर हम उसको ना लगाए और फिर भी एग्जीक्यूट कर रहे तो कोई कुछ इश्यूज वगैरह कुछ होगा? यहाँ पे कुछ आ रहा है? नहीं. आ रहा है. कभी कभार आपका --+ काम करता है, कभी कभार आपको नहीं करता. ये डिपेंड करता है आपके उसमें. ठीक है, --+ स्पेस भी यहाँ पे काम कर रहा है आपका, क्योंकि जो भी आपकी क्वेरीज आप यहाँ पे रन कर रहे हो, ठीक है, अगर ये क्वेरीज आपकी रन हो रही है सो दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद जो भी आप डालोगे वो रन करेगा. तो जो बैकएंड से जो क्वेरीज आती है --+ से कमेंट कर देता है. ओके ओके, अब समझा. ओके, ठीक है. स्टेप 3, Step 3, identify the vulnerable queries. So over here we're gonna use union all select operator. We're gonna use this one to identify or check all the possibilities one by one. So let's try this one. So what exactly the union operator means over here? See this one. सर ऊपर है, ग्रुप बाय के ऊपर ऊपर. So union operator is basically used to merge the two queries in a single statement. दो क्वेरी को एक सिंगल स्टेटमेंट में रन करने के लिए आपकी यूनियन ऑपरेटर यूज होता है. जैसे कि यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट इन द टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट. ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट यूनियन मस्ट हैव अ सेम और नंबर ऑफ कॉलम्स जो आप यहाँ पे यूज करोगे. जैसे कि ये देखो, यूनियन ऑल सेलेक्ट. अब यहाँ पे ये 6 नहीं था, है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये दोनों क्वेरी को रन कर रहा है. जैसे कि आपके आईडी नंबर 5 और इसको भी रन कर रहा है. तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूंगा यानी कि इसको टर्मिनेट कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, ये सेकंड वाले को रन करेगा. देख रहे हो, जिसमें से ये रिफ्लेक्ट बैक क्या कर रहा है, कौन से नंबर को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, 2 और 3 को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है. और 2 और 3 ये क्यों रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर आपके सैनिटाइज नहीं है, प्रॉपर वैलिडेट नहीं है आपके सर्वर साइड में. ये दो जो कॉलम नेम्स है, सो इसमें हम अपने पेलोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. जैसे कि मैं अगर बात करूँ एसक्यूएल स्टेटमेंट की, जैसे कि यहाँ पे चीट शीट दे रखी थी इन्होंने. ये देखो, string concatenation. SQL injection cheat sheet contain example of useful syntax that can be used to perform variety of tasks that often arise when the SQL injection attacks.
जैसे Oracle में foo you can configure together multiple strings. ये आपके पैरामीटर वैल्यूज को सिंपल बाईपास करने के लिए होता है। तो जैसे कि सब स्ट्रिंग्स आपके पैरामीटर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। कमेंट आउट देखो, माइनस माइनस कमेंट, माइनस 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 कमेंट, हैश भी आपको कमेंट यूज के लिए होता है। जैसे कि मान लो कि डेटाबेस आपको ओरेकल का देखना है तो सेलेक्ट बैनर फ्रॉम द वर्जन, बट मेरा जो यहाँ पे जो यूज है, आई एम गोना यूज द सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो जो मैं इसमें से यूज करूँगा वो होगा आपका ये। तो लेट्स यूज 2 के अंदर मैं डालता हूँ वर्जन और 3 के अंदर मैं डालता हूँ डेटाबेस। चेक करते हैं कि क्या होता है। डेटाबेस देख रहे हो कौन सा, 10.1.48 मारिया डीबी, और डेटाबेस का नाम है टेलोमियस मसल। यानी कि ये जो 2 पैरामीटर वैल्यूज हमें वेबसाइट के अंदर मिले हैं, दीज आर वल्नरेबल ओवर देयर एंड वी कैन एग्जीक्यूट कमांड्स। So what I'm going to do, I'm going to copy this one and I'm going to put it over here. This was the database name and this was the database version. Many things can happen, many things can be over there. सर ऐसे तो फिर हम पासवर्ड भी निकाल सकते हैं ना डेटाबेस के। तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी। अच्छा, next thing, when you find the database queries, remember the architecture. Simply understand the structure of the database. Database, if there is a database, there would be some tables. If there are some tables, you have to identify columns. In the columns, you will file the data. That is the actual one. So what we're gonna do over here, we're gonna try to manipulate all the things one by one. So let's try to understand the table underscore. Okay, let's try to understand information underscore schema dot tables. This is the tables architecture first of all. Information underscore schema dot columns, and this is your columns architecture. So what we're gonna do over here, we're gonna try to fetch all the things one by one, which could lead us for information getting part. So when you find some data names, remember use the table underscore name. This will be our query. So the query would be on the same thing. For example, the query would be like your, if you're doing information underscore schema dot tables, where table underscore schema is equal to database. So this would be the query. We're gonna fetch the table names from the architecture where the tables stored on the database query, and we're gonna use table name. So let me show you one thing. This query will be on your over here. So I'm gonna rename this 3 again, and over here on the 2 I'm gonna write table underscore name, and I'm gonna run a direct query.
सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल नेम्स निकालना चाहता हूँ फ्रॉम द हाँ सॉरी, फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, स्कीमा छोटा है, डॉट टेबल्स वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इज इक्वल टू डेटाबेस सी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एडमिन आ रहा है, टेबल नेम एडमिन, बट मुझे क्या पता कि वहाँ पे और कितने सारे टेबल नेम्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, I'm gonna use a command called limit फंक्शन यूज करेंगे। ओके यहाँ पे लिमिट फंक्शन में you have an error on your syntax, check yes। So I am getting an error। देखो कैशियो फॉर्मेट which is also लिमिट फंक्शन से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखो लिमिट फंक्शन का मेजरली काम क्या होता है कि ये आपके फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम निकालता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट रो से मैं अगर कॉलम निकालूँ, दूसरा कॉलम निकालूँ, एक मिनट, ये वाला, ये देखो कैटेगरीज, तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हो कि आपके कितने नंबर ऑफ पैरामीटर वैल्यूज है। डिलीट्स 4 डॉक्यूमेंट्स, फैकल्टी, ठीक है ना। सो लिमिट फंक्शन का मेजरली काम क्या होता है कि आपके प्रॉपर आर्किटेक्चर को आइडेंटिफाई करना, यानी कि फर्स्ट रो से कॉलम्स को आइडेंटिफाई करना। अदरवाइज अगर आपको लिमिट फंक्शन नहीं यूज करना तो यू कैन यूज, यहाँ पे आप सीधा इसको ब्रैकेट में डाल दो और यहाँ पे लिख दो ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैट। ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैटिनेट क्या करेगा, सारे के सारे टेबल्स आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये देखो, तो इतने सारे यहाँ पे थे, तो मुझे कौन सा यूज करना चाहिए था वो मुझे खुद नहीं पता। So there are many further things can be happen। तो यहाँ पे एडमिन है, कैशियो मिफ्ट है, कैटेगरी है, डिलाइट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, फैकल्टी है, गैलरी है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ है, लॉगिन डॉट आईपी, मैसेज, न्यूज़, पेज, स्लाइडर, वीडियोस। सो अगर मैं एक अटैकर हूँ तो मैं बेसिकली क्या देखूंगा, आई एम गोना लुक फॉर एडमिन ऑब्वियसली। और डेटाबेस का नाम क्या था हमारा, डेटाबेस का नाम था हमारा सिंपल ये। सो यहाँ पे अब जो मैं बात करूँ, ये मेरा टेबल नेम था, तो टेबल नेम की जगह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉलम नेम, क्योंकि अब कॉलम्स निकालेंगे फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट कॉलम्स के आर्किटेक्चर से, वेयर टेबल अंडरस्कोर, अब नाम, टेबल का नाम आएगा कि टेबल का नाम क्या था आपका, टेबल का नाम था मेरा एडमिन, सॉरी इट वाज एडमिन। और ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू को हम डबल कोट से एनकोड करते हैं। ये देखो आ गया, एंट्री आईडी, यूजर नेम आईडी एंड पासवर्ड। बट सबसे पहले क्वेरी को अंडरस्टैंड करो कि क्वेरी क्या थी। ये देखो दो
वल्नरेबिलिटीज निकाल दी इसने। क्रॉस स्क्रिप्टिंग निकली है, एक एसएमटीपी हेडर मिल गया। कभी कभार एक्टिव लॉग से भी आपको वल्नरेबिलिटीज मिल जाती है। देखो यहाँ पे 6 वल्नरेबिलिटी दिखा रहा है। तो अभी इसको देखेंगे। लेट्स सी डिकोडर, डिकोड एज यूआरएल। हाँ, सो यहाँ पे यूनियन ऑल सेलेक्ट ग्रुप कॉन्केटेनेट यूज कॉलम नेम 345 फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट कॉलम्स वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इज एडमिन। तो यहाँ पे टेबल निकाल लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एंट्री, मुझे कौन कौन सी एंट्री मिली है ये देखो। एंट्री आईडी यूजर नेम आईडी पासवर्ड टाइप एंड स्टेटस। सही, चलो ये सारे निकालने की कोशिश करते हैं, क्या होता है देखते हैं। Come to the database. अब मैं ये जो क्वेरी होगी वो मैं डायरेक्ट कहाँ से रन करूँगा? डायरेक्ट जो हमारी सिंटेक्स होती है, डायरेक्ट हम एडमिन से रन करेंगे इस क्वेरी को। सिंपल। अब मुझे ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एंट्री यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड स्टेटस टाइप को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि एंट्री आईडी को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे आईडी नंबर और पासवर्ड चाहिए। हाँ ये रहा। तो इसमें स्पेस कर देते हैं क्योंकि अभी भी पता नहीं चल रहा। तो सेमीकोलन सर MySQL में सिंगल कोट्स और डबल कोट्स अलग अलग ट्रीट होते हैं ना? हाँ, और डबल कोट्स हो जाता है स्ट्रिंग के लिए, सिंगल कोट का मैं भूल गया, एक बार बता दोगे? डबल कोट और सिंगल कोट वो डिपेंड करता है आप कौन से वेरिएबल्स को कौन से स्पेसिफिक यूआरएल में यूज कर रहे हो। इट डजंट मैटर कि आप सिंगल कोट यूज कर रहे हो, डबल कोट यूज कर रहे हो। ओके। So there will always a part of the query. So this is a hash that we found, and let's see which kind of hash is it. Let's use hash hyphen identifier. This is MD5 hash. So let's use a normal website. Hash identifier. So let's use hash. I was using killer. Let's try to break this one. I guess this was an easy password. Yeah, this was easy.
Here's the password. Pizza @123. Lol. So how it could be manipulated? It could be easily breakable or guessable. See, a normal attack can be performed by easily over here. The major objective of this one is to simply enumerate or find the relevant data. The major important thing is to find the parameter value and which syntax you are using. I can use anything. I can use PK also. See, there are many other websites over there. ID is equal to 337. How would I know this is vulnerable or not? If I have an error just like this one, a Pakistan website. This is an HTTP website. See, balance the query. Order by 9. Spelling order. No error came. This is a string value. Sometimes we have to put single quote over there. Unknown column 9. 6. Yes, 6 present. 1, 2, 3, 4, 7. Number of columns are 6. Union, I will select. Not accessible. Unappropriate present sequence response could not be found on the server. Error generated by the mod security. Ah, there is a mod security over here. Mod security means your firewall is there. So mod security where something like your union might be blocked over there. So you have to simple change the value according to the value type. We have to make it firewall detectable, undetectable part. This website is vulnerable, and this is an HTTPS website of Pakistan. But there is an SQL injection, but you have to bypass the mod security. And if you look for the mod security vulnerabilities, mod security is just like your open web application firewall. You can write mod security bypass medium web evasion. Say this one. Sometimes you have to simply use these queries. In the first part of web evasion techniques, we have seen to bypass a web rule, wildcard, and more things. Sometimes they block the union statement. So you have to simply use all the queries one by one, because you have to break the queries that cannot be executed. See, if you break the queries in simple one by one string, it will execute after all also. Our major agenda over here is to simply enumerate all the possibilities one by one that could be lead us for information getting part, but and many more other things. There are many things can be happen over there one by one. See, if you find SQL injection, this queries might be blocked, but I guess we can use this statement if we want to.
because this statement is basically your query that is generated. See, the plus over here is basically used to space point. Union has been star is basically a wildcard. Union select statement. This is also be blocked. But if you find a parameter value, for example, if you find a parameter value on the server side, we can use SQL map over here, hyphen dbs. They find the mod security on the website. How do you want to show that you continue with the further stages? Let's use this one. You can see the basics test allows get parameter IDs might be injectable. Possible type is data MySQL DBS. Let's try. Yes. Yes. सर कोई डेटाबेस पे कनेक्ट करके दिखाओगे? हाँ? मतलब जिसके पासवर्ड मिले थे उस पे कनेक्ट करके दिखा सकते हो कि कैसे कनेक्ट करते हैं?